Good morning, dear students. Students, today we will start Unit 3 in Business Studies, Public, Private and Global Enterprises. Okay. So in this chapter, we will learn two topics, private sector and public sector, and second is global enterprises, joint venture and public-private partnership. Okay. So today we will start from the first topic, private sector and public sector. In this chapter, we will discuss first of all, meaning, features and forms of private sector. Second, meaning, features and forms of public sector. And meaning, features, merits, demerits, utilities of departmental undertakings, plus public corporation and government companies. Okay. So we will start from the private sector. So before start this topic, first of all, every country has numerous small and large manufacturing, trading or services organizations which are either privately owned or government owned. So all business organizations affect daily economic life, thus are an integral part of the economy. So Indian economy has combination of both private owned and government owned business enterprises. Okay, and that is called mixed economy. जो हमारे इंडिया में जो हमारी इकोनॉमी है वो मिक्सचर है प्राइवेट और गवर्नमेंट की दोनों की. So that is called mixed economy. So we will start from the first topic, meaning, features and form of the private sector. First of all, हम private sector के बारे में देखेंगे. So what is the meaning of private sector? So students, it refers to the sector of business consisting of business owned by the private individuals or groups. Okay, means it consists of privately owned enterprises in which first point, all factors of production are privately owned by individual or group of individuals. First of all, जो production है, जो all factors of production है, are जो privately owned हैं, जो owner है इनके वो private person है, group of persons हो सकते हैं और single person भी हो सकते हैं. And the main objective of private sector is the monetary benefit and earning maximum profit. Okay. And third point is the business entities in this private sector जो forms आएंगी that's a sole proprietorship like partnership, cooperative societies, joint Hindu family business, private companies and global enterprises means MNCs, multinational companies. Multinational companies कौन सी होती हैं? That's are the business organization which operate in more than one country. जो एक country से ज़्यादा में business कर रही हैं. So since they operate in more than one nation, so they are also called global enterprises. इनको हम global enterprises भी बोलते हैं और MNCs भी बोलते हैं. So ये सब included है private sector में. और you can add some examples. First of all, Anil Dhirubhai Ambani Group, Reliance Capital, Reliance Communication, Reliance Infrastructure, Reliance Health, Reliance Entertainment, Reliance Power. Okay, these are the examples of private sector. Aditya Birla Group, Ratan Tata Group, Big Bazaar Departmental Store, DLF, Vodafone, Reebok. These all are examples of private sector. Okay. After then, the features of private sector. First point is the profit motive. So the main aim of the private sector is to earn maximum profit. Second is the private ownership. So students, in this topic, private people have complete ownership of the enterprise of this sector. So there is no state and central government interferences. कोई interfere नहीं करेगा इसमें government का person. So ownership किसकी रहेगी? Private persons. Third is the profit as evidence of success. So the success of enterprises of the private sector can be measured through the degree of profit. Okay, but the यहाँ social responsibilities भी पहले से काफी increase हुई हैं. And fourth point is private management. They are managed by their owners. In case of companies, the board of directors nominated by shareholders take care of the business. ठीक है, sole proprietorship में owner ही है, partnership में owners हैं, cooperative society में भी सब जो members हैं, और joint Hindu family में कर्ता, and in companies, private companies, directors. Okay, directors manage करते हैं सब. And next point is the less political invention. So political interferences जो है इसमें बिल्कुल ना के बराबर है. That is a negligible in this sector. Okay.
So next topic is firms. Forms of private enterprises. Business organization in the private sector can be divided into two parts from the legal point of view. First is the incorporated and second is the non-incorporated. ओके, इनकॉर्पोरेटेड में आती हैं कंपनीज और नॉन इनकॉर्पोरेटेड में आती हैं जो कंपनीज नहीं है, लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पार्टनरशिप, ठीक है, ये सब आप इसमें इंक्लूड करेंगे। नॉन इनकॉर्पोरेटेड जिसमें जो फॉर्मेलिटीज है वो बिल्कुल नहीं होती है, जो आप विदाउट रजिस्ट्रेशन कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉलोइंग इन द कैटेगरी ऑफ द इनकॉर्पोरेटेड हैव गॉट द टू बी रजिस्टर्ड अंडर लॉ कनेक्टेड विद अ डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस, एंड इट इज ओनली थ्रू दीज लॉज दैट देयर एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड। इन लॉज के बिना ये स्टार्ट नहीं हो सकते जो इनकॉर्पोरेशन में जो भी एंटरप्राइजेस हैं। सो जो इन केस ऑफ नॉन इनकॉर्पोरेटेड business organization, that can be started without any registration, which means that there is no need to seek permission under any law to start them. कभी भी स्टार्ट किया जा सकता है, कोई परमिशन नहीं लेनी है कहीं से भी, तो ये कभी भी आप स्टार्ट कर सकते हो। इसमें कौन कौन से आएंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप फर्स्ट ऑफ ऑल। सो सोल प्रोप्राइटरशिप, we have already discussed this topic in unit 2. Sole proprietorship means that is that trade is that form of business which is established by a single individual, है ना, and that person invests the necessary capital, manage and direct it himself by using his जो भी उसकी कैपेबिलिटी है, एंड हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल, वो खुद ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है अपने डिसीजंस के लिए फॉर प्रॉफिट्स एंड लॉस। सो सच ए बिजनेसमैन इज कॉल्ड सोल ट्रेडर एंड ट्रेड इज नोन एज सोल ट्रेड। ओके, सो सोल प्रोप्राइटरशिप यू नो वेरी वेल, no formalities need to be performed for this kind of business. इसमें कोई formalities नहीं होती, that is the oldest and simplest form of the business organization. Second one is a joint Hindu family business. So when a business enterprise is run by the people belonging to the same family and they run the business as a family business, it is called joint Hindu family business. Okay, जो अथॉरिटी है वो कर्ता के हैंड्स में रहती है और मैनेज भी वही करता है इसमें। ओके, कर्ता हु इज कर्ता? जो सबसे बिग पर्सन होगा पूरी फैमिली का। सो द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ द गाइडेंस ऑफ कर्ता। ओके, एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली हैपेंस टू बी अ कर्ता and he has the absolutely authority to raise loan, have deals with other parties and take decisions. Okay, उसी के बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटीज हैं। वो कभी भी लोन ले सकता है, बढ़ा सकता है, वापस कर सकता है, जो भी पार्टीज के साथ डील करना है और जो भी एक्शन लेने हैं और डिसीजंस लेने हैं वो सब करता ही करेगा। So the other members of the family cannot ask for any account of the profit and loss, but they can ask for the division of ancestral property. अगर उनको कोई प्रॉब्लम है उनके डिसीजन से, तो वो अपने जो शेयर है उसका लेके अलग हो सकते हैं। ठीक है, वो अपने जो शेयर के लिए इसमें डिवीजन करवा सकते हैं, बट उसके डिसीजन के ऊपर क्वेश्चनिंग नहीं हो सकती। ठीक है, ऑल हैव एन इक्वल शेयर इन द फैमिली प्रॉपर्टी। यहाँ एज मैटर नहीं करेगी, जितने भी मेंबर्स उस फैमिली के हैं उन सबका इक्वल शेयर रहेगा। सो एज फार एज लायबिलिटी इज कंसर्न, लिविंग द कर्ता अलोन, ऑल हैव ओनली लिमिटेड लायबिलिटी। कर्ता के अलावा बाकी सबकी लिमिटेड लायबिलिटी रहती है। सो अनलिमिटेड लायबिलिटी किसकी है? यहाँ पर सिर्फ कर्ता की, और इसी से वो इंस्पायर रहता है कि वो जो डिसीजंस ले वो सही से ले। सो दिस टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज रन ओनली इन इंडिया, एंड एज इट्स नेम इंडिकेट्स ओनली द Hindus can establish such a business. Okay, so the joint Hindu family business is governed under the Hindu law. Third point is the partnership. Next, partnership firm. Partnership means that the form of organization in which two or more than two persons willingly join hands and agree to run some lawful business. So they all invest capital in the business, make use of collective managerial ability and share profit and loss among themselves. Okay, minimum 2% and maximum 50 people can run that business. Okay, and one can say that this form of business is needed because of the limitation of the sole proprietorship. अगर सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर लैक ऑफ कैपिटल है या कुछ भी
इसमें लैक ऑफ मैनेजमेंट, तो उसको उसकी लिमिटेशंस को पूरा करने के लिए, रिमूव करने के लिए यहाँ पार्टनरशिप वो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज द जॉइंट वेंचर. So under this form of business organization, 2 or more than 2 people, there are no maximum limit of numbers, jointly run some particular business temporarily, and all the co-venture divide the profit or loss according to the predetermined ratio. So with the completion of a particular work, the agreement for joint venture ends automatically. जैसे ही वो काम कंप्लीट होता है तो ये जो पार्टनरशिप उन्होंने की थी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी जॉइंट वेंचर में. ये एक लिमिटेड पीरियड के लिए होगा. एंड कॉन्सिक्वेंटली द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द जॉइंट वेंचर आल्सो एंड्स. जो उनकी लायबिलिटी थी वो भी ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी. सो दिस बिजनेस इज जनरली एस्टैब्लिश्ड फॉर द कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स or for underwriting the shares or debentures and construction of building, roads, bridges and canals, etc. जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पर्टिकुलर एक काम के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया, और जैसे ही वो काम कंप्लीट हुआ, आफ्टर देन ऑटोमेटिकली वो जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी जो भी थी वो सब वहीं पर एंड हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट फॉर्म इज जॉइंट स्टॉक कंपनी. This form of ownership is adopted for a business where more capital is required. ये तब करते हैं, इसको स्टार्ट अडॉप्ट करते हैं जब बहुत ज्यादा यानी कि लार्ज लेवल पे, लार्ज स्केल पे बिजनेस को करना है, एंड वेयर रिस्क इज कंपैरेटिवली ग्रेटर, जिसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा रहेगा. सो दिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस, राइट. तो अभी मैंने अब स्टार्टिंग में बताया था इनकॉर्पोरेटेड एंड नॉन इनकॉर्पोरेटेड. तो जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, इनकॉर्पोरेटेड में आएगी. So on this very basis, it is established under the Companies Act 2013. So joint stock company created by law is in the form of an artificial individual whose existence is different from its members. इसकी existence अब उसके members से अलग है, क्योंकि ये इसकी इनकी liability जो है वो limited है. It has seal which gives information about its separate existence. So the liability of its member is limited. And it is run by the representative selected by the shareholder, जिसको आप बोलते हो board of directors, right? So joint stock company is of two types, private and public company. Okay, so the basis of differences between both the types of companies आपको पता है. So first of all, transfer of shares, second is number of members, third is inviting public and issuing shares and debentures, fourth is inviting public for issuing public deposit and minimum amount of paid up capital. And last one is the cooperative enterprises. Cooperative enterprises or cooperative societies are in the form of voluntary association, which comes into existence with the purpose of serving their members. कुछ members मिलके ये start करते हैं इसको voluntarily. Like other business organization, their purpose is not to earn profit, yes, but serve their members. अपने members की services के लिए उनको less amount पे goods provide करवाना, less prices पे. So they are established by needy people of a particular class who are economically weak to meet their general needs collectively and with mutual cooperation. Okay, so the cooperative enterprises are registered under the Cooperative Societies Act 1912. And there is more of government control as compared to the other form of the private sector. Okay, these societies have special privilege in respect of permanent existence, limited liability. इसमें भी limited liability है. So these days there are many types of cooperative societies in existence. So they include consumer cooperatives, producer cooperatives, marketing cooperatives, credit cooperatives. ठीक है, ये सब consumer cooperatives हैं. जैसे for example, that is a good example of consumer cooperatives. These societies make bulk purchase, इकट्ठा बहुत सारा मटेरियल जो परचेज करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द होलसेलर, ओके, और या फिर प्रोड्यूसर से ही परचेज कर लेते हैं. सो दैट द मटेरियल इज ऑब्टेन्ड कंपैरेटिवली एट चीप रेट्स. उसको चीप रेट पे उनको मिल जाता है. सो आफ्टर दैट दे सेल दिस मटेरियल टू देयर मेंबर्स, और वो बिल्कुल चीप रेट पे ही उनको सेल करते हैं. सो अदर पीपल एट द मार्केट रेट और इवन एट चीपर रेट्स, मतलब मार्केट के कंपैरेटिवली बहुत कम रेट पे उनको अवेलेबल हो जाता है वो मटेरियल.
Okay, so next topic is the public sector. So public sector includes those business organizations which are of public interest and which are controlled and run by the government. Okay, so it refers to the sector of business consisting of businesses owned by the state. Public or government enterprises have achieved an important place in the economy of the country during the last few decades. Till the 19th century, business organization in the private sector ruled the roost. But the industrial development with the advent of the 20th century brought into focus the disadvantages of business organization in the private sector. So these disadvantages included the exploitation of consumers and labor, monopolizing tendency of big business enterprises, cutthroat competition. So similarly, no attention was being paid to the development of industries in the private sector, which required huge capital and which had a long gestation period to yield any profit. Okay, so the result of all this was the government interferences was thought to be paramount for the making the people free from exploitation and ensuring the complete development of the country. Okay, first of all, what is the meaning of public enterprises? Public or government enterprises mean those enterprises which are established by the government and whose ownership and management are also in the hands of government. So these enterprises are either entirely owned by the government or their maximum ownership lies within it. Maximum is 51%, more than 51%. So these are known by the name of state enterprises, public sector undertakings, government undertakings, जो इनके वो name है government के अंदर. So their aim is to provide goods and services at reasonable prices to the people. Our main aim is to service of the people. Yet it cannot be separated from the purpose of earning profit. Main motive इनका profit नहीं है, secondary है, but first is the to provide the services to the people. The reality is that these enterprises are established with the purpose of earning reasonable profit while serving society. We society के services करते करते साथ में reasonable profit भी रखते हैं अपने साथ. So it is important to clarify that all the government concern are not government enterprises. अब ये मत सोचो कि जितने भी government concern है वो सारे government enterprises के अंदर आएंगे. For example, government hospitals भी हैं, government colleges भी हैं, that are not government enterprises. Okay, only those government concern are called public enterprises which undertake economic or business activities. जो business के point of view से और economic के point of view से work कर रहे हैं, activities में participate कर रहे हैं, that are the public sector. Okay, जितने भी government school हैं, government college हैं, government hospitals हैं, ये सब government sector में, government enterprises में नहीं आएंगे. So the simple example of government enterprises are the nationalized bank, which have been established in our cities and villages. जो nationalized bank होते हैं ना, जो cities में और villages में होते हैं, that is the main example of the public sector. If one look at the signboard of any branch of these banks, जैसे UCO bank है, one shall find the words, उसमें लिखा होगा a government of India undertaking written under their name. उनके नाम के साथ ये line जरूर लिखी होगी. So this is an indication of the fact that this is the public enterprise. ठीक है? So the sample of UCO Bank आपके book में mention है, आप देख लेना. UCO Bank, MMTC, ऐसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नाल्को. These are the examples of public sector. Okay. Difference clear है? What is the difference between the public or private sector? Okay. Now, what is the difference between public company and public sector? So there can be some doubt regarding the term public company and public sector, if both are the same. But public company is the form of business organization in the private sector, and it is called public company on the basis of some special feature. आपने public company के बारे में last unit में किया भी है.
So on the other hand, public sector is that form of business organization where the business is run by the government. यह गवर्नमेंट ने ही रन करना है बिजनेस को, ओके okay? और पब्लिक कंपनी में क्या था कि पब्लिक इन्वॉल्व थी, उसमें पब्लिकली शेयर्स इशू किए गए हैं, ओके. सो दैट इज द बिग ह्यूज डिफरेंस बिटवीन both are different. Now what are the features of public sector? Okay, first point is the state ownership. The ownership of the government enterprises is either entirely with the central government, state government, or local government, or as held jointly. Okay, so second is the state control. The management and ownership of the public enterprises are in the hand of the government. Some of the enterprises are established by the government under its own department. For example, post and telegraph services are handed over to the post and telegraph, the department which is run by the Ministry of the Communication. Okay. Third is the financial freedom. Almost all the financial needs of the public enterprises are met through the investment of the capital by the government. इसमें जो पैसा लगा हुआ है वो सारा गवर्नमेंट के थ्रू लगा. So these days, however, they have been permitted to fulfill their financial needs by obtaining capital from the public because of the liberal policy of the government. अभी क्योंकि वो पैसा पब्लिक से भी लेके इसमें पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है, लिबरल पॉलिसी को यूज कर रही है गवर्नमेंट. सो देयरफॉर द गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस मोस्टली गेट लोन एंड कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक टू सेटिस्फाई देयर फाइनेंशियल नीड्स. ओके, वो यहाँ पर पब्लिकली पैसा कलेक्ट कर सकती है अभी. नेक्स्ट इज द सर्विस मोटिव. इसका जो मेन मोटिव रहता है, चीफ पर्पस, दैट इज द गवर्नमेंट जो एंटरप्राइजेस का वो क्या है, सर्व सोसाइटी. A private enterprise is established only when there is some possibilities or hope of profit. But a government enterprise is established for the service of society, even if there is loss in its establishment. Loss भी तब भी वो उसमें work करते हैं. Right? Next feature is public accountability. So the private enterprises are accountable for their progress only to a few individuals, especially their owners. Okay. और जो कि गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस हैं आर अकाउंटेबल नॉट ओनली फॉर द गवर्नमेंट बट ऑल्सो फॉर द पब्लिक. ओके, एंड देन पॉइंट इज द हार्मोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशंस. सो द एटीट्यूड ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेस इज मोर लिबरल इन द कंपैरिजन विद दैट द बिजनेसमैन इन द प्राइवेट एंटरप्राइजेस. पब्लिक के साथ बहुत ज्यादा ये लोग लिबरल हैं कंपैरेटिवली प्राइवेट एंटरप्राइजेस के. So these enterprises adopt the policies which are beneficial for their employees, consumers, ultimately the entire society. Because of this very characteristic of these public enterprises, they have harmonious relations with all the other parties. Okay. Next point is the use for all the sector. So public enterprises do not serve any particular section of the society. ये सिर्फ एक particular section के लिए work नहीं करते, but are beneficial for all. जैसे कि पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट है, दैट सर्व्स द एंटायर सोसाइटी इन द इक्वल मैनर. ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए किया है. नेक्स्ट इज द मोनोपोली इन फ्यू सेक्टर्स. या पब्लिक एंटरप्राइजेस हैव अ मोनोपोली इन सम सेक्टर्स. मोनोपोली का मतलब होता है कि एक ही अपना कंट्रोल बना के रखना. जैसे सम पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज कैन बी एस्टैब्लिश ओनली इन द पब्लिक सेक्टर्स. कुछ उन्होंने अपने हाथ में ही रखी हुई है, जैसे कि रेलवे है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज है, ये सब गवर्नमेंट के अंडर है. So it is important from the point of view of the social service because these industries do not yield much profit and are so therefore of not much interest for private sector enterprises. So in 2001, 3 industries were reserved exclusively for the public sector. These were, एक तो थी atomic energy, second is the arms and third is the rail transport. ठीक है, इन 3 को इन्होंने मोनोपोली है कि इसमें प्राइवेट लोग जो है वो नहीं आ सकते. राइट. सो नेक्स्ट टॉपिक इज द फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस. सो इन दिस टॉपिक जो मेन फॉर्म्स हैं वी विल डिस्कस टुमारो. फर्स्ट इज द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सेकंड इज द स्टैट्यूटरी और पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड थर्ड इज द गवर्नमेंट कंपनीज. These are the main 3 forms जो है कि अंदर आती हैं किसमें, पब्लिक सेक्टर में. That topic we will discuss in next lecture. So students, now revise this topic students. If you have any queries, now you can ask. Okay.